के बाद जब 11 में आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए, तो इफ़ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरा भी वो प्रॉब्लम रहा है कि अचानक से हिंदी से इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो सारी दुनिया ही बदल जाती है। और वो एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश, एक माइंडसेट है, और वो इतना कई बार साइकोलॉजिकली इतना झिझोड़ देता है कि कई लड़के वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस क्लास 11? हाँ, सो पहले बोलने के पहले कि मेरा एक्सपीरियंस एग्जैक्टली कैसा था, उससे पहले ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, इवन पूरे कंट्री में जो रीजनल लैंग्वेजेस में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, इवन बहुत सारे इंजीनियर से मैंने बात किया। जैसे अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कन्नड़ा में पढ़ाई की, अपनी क्लास 10 तक या 12 तक सडनली हो गए। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने सिमिलर काइंड ऑफ उनके भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस, तो क्लास 11 में जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, तो मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में मैं फेल था, बट हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स था। तो क्लास टीचर आती हैं क्लास में, सबका कॉल आउट कर रही हैं, सबका नेम और सबको हैंड ओवर कर रही हैं, सबका मार्कशीट। जब मेरा नंबर आया, उन्होंने देखा हिंदी में मार्क्स अच्छा है, बाकी सब में फेल है, उन्होंने रख लिया। बोला अच्छा एक बार मैं हिंदी मैम से क्रॉस चेक करती हूँ तुम्हारा हिंदी का मार्क्स, और उसके बाद फिर मैं तुमको देती हूँ। तो क्लास में सबके पास मार्कशीट था, मेरे पास मार्कशीट भी नहीं था उस दिन। बट लर्निंग था, अब जो था वो एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसके बाद बट मैंने कभी भी कोशिश नहीं छोड़ी, ठीक है अच्छा करना है। आई केप्ट ट्राइंग, आई केप्ट गिविंग माई बेस्ट। तो 11th में 11th का रिजल्ट जब आया तो सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरा था, तो होना भी था। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे 11th में जो फेल हो गए थे, जो ऑलमोस्ट फ्रॉम देयर फर्स्ट क्लास दे वेर लाइक स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम एंड एवरीथिंग। तो फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो मीडियम में पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है, बट वही सब कुछ नहीं है। और एक दूसरा पॉइंट और मेरा रियलाइजेशन जो लैंग्वेज को लेके था कि अब सिर्फ लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करने के लिए इंग्लिश नहीं थी, वहाँ पे लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। तो अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम था। तो फिर मेरे को क्या लगा, मैं वहाँ पे उस स्कूल में सबसे अच्छा बच्चा और सबसे डिसिप्लिन बच्चा था, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं था, क्योंकि बोलने के लिए इंग्लिश में बोलना होता। तो मैं शांत और चुपचाप रहता था। एक या दो दोस्त थे जो मेरे से हिंदी में बात करते, सिर्फ मैं उन्हीं तक सीमित था। तो क्लास 12 के फेयरवेल में सारे बच्चों को टीचर्स कुछ ना कुछ एक टाइटल दे रही थी, तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने मिस्टर सिंसियर का टाइटल दिया, क्योंकि या तो मुझे पढ़ते हुए दिखते थे या मुझे चुपचाप दिखते थे। तो ऐसा कुछ जर्नी था। No, I think this Hindi-English thing, so you experienced it in 11th when you moved from your place. I experienced the same shock when I moved from 12th to IIT. And I think it is common across. I have seen, so my journey, when I was doing my 12th, I even wrote JEE exam in Hindi. Very few does that. Some I got where I got there. And once you are in, IITs actually run a course, specially for students who are not good with English, just to get them to at par. And one of the things that we used to practice was, somebody would be standing on one side of the corridor, another guy would be standing at the another side of the corridor, and it's a long one, and they would shout and then speak to each other just to get that hesitation away. And but as you said, rightly said, half of the time, and it's independent of engineer or lawyers or anybody, many a time we just lag because we don't know the language. Good part about engineering is you really don't have to know the language. As in, the better side of it was, because most of it was mathematics, most of it was physics, chemistry, something which is logical. So half of it, any which way, you have to write in English, right? Home, you have to create that symbol only, right? So that way it helps, but for sure, even in terms of like in your organizational growth and things, if you don't know the language in which usually people are conversing, it becomes very difficult. And similar occurs, I think, anybody who has changed the language, and you have started your career, I heard from, or not career, I would say the schooling in one of the local, like Maharashtrian or Marathi school.
I'm pretty sure you must have faced something similar, if not Yes, exactly I think same. those who are studied in regional language till 10th standard or fourth standard, I mean not till 12th standards, it's the same case for everybody. But for me, the situation was quite better. मेरा जो स्कूलिंग था विलेज में हुआ, जो जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने अच्छा नहीं किया, तो देयर वाज रीज़न बिहाइंड इट। मेरे जो ग्रैंडफादर थे विलेज के मुखिया थे, तो टीचर ज़्यादा पूछते नहीं थे तो उनका काफ़ी सहयोग था। तो तो स्कूल से ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान था, तो बहुत लाइटली लेता लिया था स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर घर वालों फैमिली को जब पता चला कि इसे तो कुछ आता नहीं है तो उन्होंने एक नियर बाय सिटी है वहाँ पे मेरी एडमिशन करवाई। तो वहाँ पे जब मुझे रिपीट करवाया गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने रिपीट किया वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर सब कुछ नया था मेरे लिए, बिकॉज़ इट वाज़ बिगर सिटी एंड इट वाज़ अ न्यू चेंज टू मी। सो आई स्टार्टेड एंड सडनली एक दिन टीचर ने मुझे आगे बुला लिया कि आप आगे आओ। मैं गया, तो उन्होंने पूछा कि एक ब्लैक बोर्ड में जो पढ़ा है आप पढ़िए। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने खुद रियलाइज़ किया कि मैं थोड़ा बेटर डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक दैट फ्रॉम दैट मोमेंट मैंने थोड़ा-सा अच्छे से मेरा स्टडी प्लान करना चालू किया, या फिर वो तो बहुत छोटे थे तभी, तो रियलाइज़ नहीं किया था कि ये एक मोमेंट है। बट जब मैं अभी देखता हूँ तो यस, दैट वाज़ अ मोमेंट वेयर आई रियलाइज़ कि यार पढ़ना चाहिए। तो तो 4th स्टैंडर्ड में एक छोटा स्कूल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 4th स्टैंडर्ड मैंने वही कंप्लीट की। सो 4th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद मैं एक थोड़े बड़े सेटअप में गया, वो थोड़ी बड़ी स्कूल थी, एंड देयर वी इंट्रोड्यूस्ड अ लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश, एंड इन फिफ्थ लैंग्वेज वी स्टार्टेड लर्निंग एबीसीडी। So I think it may be the case with all of you. So after 7th standard in our school, एक स्पेशल क्लास था, सेमी इंग्लिश मीडियम। सो सेमी इंग्लिश मीडियम का ऐसा था कि आपके मैथ और साइंस जो है ये सब्जेक्ट इंग्लिश में थे, और बाकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री जो है रीजनल लैंग्वेज, दैट इज माय मराठी लैंग्वेज। सो पूरे स्कूल में एक ही क्लास था, 60 का स्ट्रेंथ था। But because of the school was a very reputed school, so city के जितने भी bright students थे, they used to take admission there, and so काफ़ी अच्छा competitive environment था। So since I was from the regional state board, and still now was uh, मराठी मीडियम से आया था। So it was a, I mean, change for me, but gradually, I think most of the students were of that nature, and also I should really appreciate the people who really designed that course, because there must be some intelligent thought process behind it, because क्या था कि उन्होंने दो ही सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में रखे, बाकी जो है रीजनल लैंग्वेज में रखे। ये हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पे जो आते थे वो रीजनल बैकग्राउंड या रीजनल मीडियम से आते हैं, और उनके लिए अगर सब के सब सब्जेक्ट आप इंग्लिश में एक साथ करो। रखोगे तो इट मे बी शॉकर फॉर देम, एंड दे मे नॉट परफॉर्म वेल। सो इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस टू uplift their English language and get into the stream. So I think that is the one thing I really appreciate what they did. And after completing 10th standard, then I went to other college for 11th, 12th. So as usual, very busy years and very intensive in terms of study. So that's how I did my schooling. But yeah, I agree with Vivek that English language, when you do your maximum schooling from your regional language, and suddenly get into the where you find that you are surrounded by the English environment, then yes, that's really a challenging situation to overcome. But I think after 12th engineering, when you get into engineering, it happened to me also, because
I came from smaller cities of Maharashtra, and my college was very. I mean, one of the city which is near to the Pune and Mumbai. So maximum strength are from that cities, and those students are. I mean, if you compare with them, they are very communicative. They are good in communication. They have good hold on English. So in terms of confidence, they were way ahead of me or the people who are like me. So I maybe technically you are very good, you can do well, but when it comes to the talking or in terms of presenting yourself, you are, I mean, you lose confidence there. So that's how, I mean, communication, I mean, English language plays the role. Yeah, so I think I want to for the viewers, actually this is not the problem of engineering. It's just happened that we are discussing English in this episode. See, I am a chartered accountant, but I face the same thing. गांव से पढ़ाई की और इसके बाद शहर में आए कलकत्ता में, और वहाँ पे फिर क्लास 6 में पूरा हिंदी मीडियम स्कूल था गवर्नमेंट का, और क्लास 6 में पहली बार ABCD पढ़ना शुरू किया और कॉन्फिडेंस हिल जाता है. तो इंग्लिश फॉर दोज पीपल हु हैज़ गॉट आइदर हिंदी मीडियम और एनी अदर मीडियम रीजनल लैंग्वेज, इट इज़ नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट प्लेज ऑन द कॉन्फिडेंस. और जब तक आप उसमें पूरी तरह से मास्टर नहीं हो जाते हो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि एक क्लास के बीच में या 50 लोगों के बीच में आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझा पाओ. इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट यू in your professional career, in your life, rest of the life, because English, as Praveen said, it opens up the door for communication with more and more people. It increases your reach, and therefore my experience has been कि English has transition from Hindi to English has been very tough. In fact graduation तक वो confidence नहीं था कि एक statement और एक अच्छे से क्लास के सामने खड़े होकर बोल सकें इंग्लिश में. इनफैक्ट विवेक, मैं तुम्हारे से बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे भी डर लगता था कि कहीं टीचर खड़ा करके स्कूल में किसी क्लास पे खड़ा करके पूछ न ले और मुझे इंग्लिश में जवाब देना पड़े, मैं कैसे जवाब दूंगा. तो हमेशा डर के साए में रहता था. एंड आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मेनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस इन आवर कंट्री. सो द सोल्यूशन, like we are in one of, I mean, we have all seen and we have one of the best professionals streams, and then organization wise we have seen the world as well. So हमें लगता है कि इसको हर्डल की तरह नहीं रखने देना चाहिए. We should overcome this hurdle called English, and this is just a language, but initially the support is required from the teachers, from the friends and family to that phase of 2 to 3 year, 4 year, and then we do wonders. अब आज के दिन में हमने पॉलिसी मेकिंग भी की इंग्लिश में और ड्राफ्ट्स भी बनाए, और आई मीन वी आर वेरी मच कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू एनीबडी. सो द मैसेज इज वेरी क्लियर. it should be converted as an opportunity, and then I mean rule the world. It's just a language, and for engineers it's just like those languages like Java, C++, and English. I think every language has a grammar. Just like we see syntaxes in our world, basically IT world or CS world. Interesting part is, as you said, it's an opportunity. In the end, each one of us has learned. So when I moved from 10th class to 11th class, I got introduced to differential. D by dx is something which is a mathematical term. And when we looked at the first time on it, it was like, what is this? Right? Same goes with English. Like most probably Vivek and Sandeep might have been on a similar note. It's not that till 10th or 12th you don't know the language. You know the language. It's about making it your communication language. It requires first listening to somebody, processing that. It's equivalent to like some computer is doing its task, and then eventually responding back. So then your CPU has to work a little more, but eventually you have to do it. Because if you don't do it, you want to be able to talk to, let's say, outside India or even within India, you want to be able to communicate with certain people who don't know that language. So it's
need of the hour. You should not feel, or you should not feel low on confidence. Not that I have not felt it at some point in time, but eventually I think all of us has seen in some or the other thing we might have felt low, but it's an opportunity. You grab it, you learn it, and then you overcome. Yeah, absolutely. Great. Absolutely. Yeah, so I think you want to add something to it, Vivek? Yeah, I totally agree with Praveen and each one of you on this topic. So definitely, it definitely hits our confidence very hard. But this is an opportunity, and we have to overcome. And many times, this is something that we don't want to tell to anyone as well. At least to our friends and colleagues and students in our batchmate, right? You don't want to get exposed that you don't know English. That is another thing that holds you back from learning and opening up. So the thing is that you have to open up as quickly as soon as you understand this fact. You will you can overcome this dilemma very quickly, and this